spirits in tune to the spicy air. Thrill in the glory of city of Parmesh. Let's enjoy this Y20 day at AIIMS Rishikesh. Honorable dignitaries, dear distinguished and esteemed guests, young international and national delegates, students, ladies and gentlemen, gathered in this hall, a very good morning to all of you. On behalf of AIIMS Rishikesh, I am thrilled to welcome you all to the Youth 20 consultation on the theme of health, well-being and sports at Rishikesh, the gateway to Garhwal Himalayas and the yoga capital of the world. We have the pleasure of having with us our chief guest, Dr. Bharti Praveen Pawar, Honorable Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. I request Madam to kindly proceed towards the dais and take her seat. I invite Professor Meenu Singh, Executive Director, AIIMS Rishikesh, to kindly escort our chief guest. Ma'am, please. Thank you, ma'am. Our guest of honor, Dr. Shri Premchand Agrawal ji, Honorable Cabinet Minister Uttarakhand, will be joining us shortly. Next, we have our special guest, Shri Anmol Sovid ji, Chair Y20 India, and I request Professor Jaya Chaturvedi, Dean Academics, AIIMS Rishikesh, to kindly escort him to the dais. Thank you, ma'am. Thank you, sir. May we have a big round of applause for the honorable dignitaries. I request all the dignitaries to be seated on the dais. Thank you, ma'am and sir. Thank you all. Ma'am, please be seated. Going in sync with the ongoing move for greener ceremonies, we would like to welcome our honorable dignitaries with saplings. The saplings representing our today's youth. I hereby invite our budding doctors and nurses, young MBBS and nursing students to welcome our honorable guests by presenting saplings. I invite our dear faculty to present sash to the honorable guests. I first invite Dr. Vanna Dhingra and Ms. Sakshi and Mr. Ronak to welcome our chief guest, Dr. Bharti Praveen Pawar. Thank you, ma'am. Thank you all. I now invite Dr. Geeta Negi, Professor and Head Department Transfusion Medicine, AIIMS Rishikesh, and Mr. Mayank and Ms. Chanchal to welcome our special guest, Shri Anmol Sovid ji. Thank you, ma'am. Thank you, friends. Thank you, sir. I now invite Dr. Neeti Gupta with Mr. Tushar and Ms. Momita to welcome our Executive Director, Professor Meenu Singh, with saplings and sash. Thank you, ma'am. Thank you all. Please keep the roaring hands
applauds throughout the ceremony. We would be actually be stuck to the sound of your roaring hands. I next invite Dr. Vanna Dhingra, Additional Professor, Department of Nuclear Medicine, AIIMS Rishikesh, to welcome our dear Dean Academics, Professor Jaya Chaturvedi. I invite Ms. Nidhi and Mr. Suraj. Thank you so much, everyone. Please put your hands together once again for our honorable dignitaries. We all know that Y20 is the official youth engagement group for G20, Group of 20, the forum for the world's largest and most advanced economies. Going by the theme of India's G20 presidency, Vasudeva Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision prioritizes on the focus on healing our One Earth, creating harmony within our one family, and giving hope for our one future. Dr. APJ Abdul Kalam's famous quote says, "The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, above the earth, and under the earth." Hereby, the Y20 at Rishikesh brings together young leaders from across the globe and aims at encouraging them as future leaders to raise awareness of global issues, exchange ideas, debate, argue, negotiate, and reach a consensus. As per the theme of Y20 Rishikesh, we have planned to engage the delegates with discussions on sports and fitness, yoga and mental health, holistic and spiritual health, and digital health as future of healthcare. With these words, we welcome everyone at Rishikesh and pay our sincere gratitude to all the dignitaries and delegates for taking out their valuable time and traveling from distant places to be a part of this Y20 consultation. To mark the beginning of this inspirational event, I request the honorable dignitaries on the dais to please come forward for lamp lighting. I request Ms. Hemika and Ms. Rashika to please assist. Goddess Saraswati, the goddess of knowledge, wisdom, music, art, and learning, may Goddess bestow upon us her blessings to fulfill our vision for Y20 theme. Our young MBBS 2021 batch students choir will sing Saraswati Vanna. या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा. Thank you, ma'am and sir. Thank you, students. I would now request Professor Meenu Singh, Executive Director, AIIMS Rishikesh, to welcome the August gathering. Professor Meenu Singh, madam, is a renowned pediatrician and an academician par excellence. She has been a pioneer in evidence-based child health. She has been a pioneer in evidence-based child health in India,
With her outstanding contribution, Center for Advanced Research in Evidence-Based Child Health was built by ICMR at her former institution, PGIMER, Chandigarh. She is the co-chair of Cochrane India Network. Ma'am has several accolades to her credit, and under her dynamic leadership, AIIMS Rishikesh is growing in leaps and bounds. Ma'am, please. Thank you very much for the generous introduction. मंच पर आसीन मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण जी, उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री और शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो अभी थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, वो रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं। डॉक्टर अनमोल योविक, जो कि Y20 के एडवाइज़र एज वेल एज चेयरमैन हैं, जिनकी चेयरमैनशिप में ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश की संकाय अध्यक्षा डॉक्टर जया चतुर्वेदी जी, डॉक्टर श्रीनिवास, डायरेक्टर एम्स दिल्ली, डॉक्टर अरविंद राजवंशी, जो कि मंच पर नहीं हैं, ये सब लोग ऑडियंस में फ्रंट रो में मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद राजवंशी एम्स रायबरेली के डायरेक्टर, डॉक्टर अशोक प्रमाणिक एम्स गुवाहाटी के डायरेक्टर, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी एम्स मंगलागिरी के डायरेक्टर, जो हमारे साथ यहाँ ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम कंडवाल जी, और आई थिंक थोड़ी ही देर में हमारी मेयर ऋषिकेश श्रीमती अमिता मंगलोई जी भी ज्वाइन करने वाली हैं। ओके। देश विदेश से आए हुए हमारे मित्रगण एंड ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम G20 कंट्रीज, फ्रॉम जापान, जर्मनी, सिंगापुर, USA, UK, who are all here and have been participating in various run-up events of Y20, one of which was done yesterday as a holistic health conclave, which happened yesterday. I welcome you all to this Y20 consultation being organized at AIIMS Rishikesh, and we are really proud to know that India at the moment is passing through the phase of presidency of G20 under the chairmanship of our honorable, charismatic Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and the whole country has become vibrant with activities in different spheres. Y20 consultation is the voice of the youth, and all the nations who are working towards the upliftment of youth and their leadership are actually participating in this. We at AIIMS Rishikesh have the privilege of hosting this particular consultation today, and we have more than 700 participants who have registered with us, and we expect all of them to be the torchbearers of policy and leadership in young people throughout the world. We know the theme is Vasudhaiv Kutumbakam, that the whole world is one, and hence your interaction amongst yourselves and with your peers will actually bring in the new era for this world who's there. And we know that world is actually passing through a lot of crises, and the main one being the ecological crisis which is happening, and we all need to work towards that. So under this honorable leadership of Minister of Health and Family Welfare, AIIMS Rishikesh is extremely proud to present to you various discussions which are in the form of panels, debates, cultural extravaganza, and several run-up events, including a marathon which has already happened from AIIMS Rishikesh in the town of Rishikesh, which is called Yog Nagari, which is actually the home of yoga. And we are really privileged to be living in this particular place, and we really welcome you to be here. And God has been really kind to us that the weather has really opened up for the last 2 days, and all of you, we expect that you'll be visiting all these wonderfully natural places which are around us, including Mother Ganga, who's just across the AIIMS campus. With these words, I welcome again all of you. Jai Hind, Jai Bharat.
Shri Anmol Sovit ji. Mr. Sovit is Chair Y20, which is G20 India's youth engagement group. As the chair, he is committed to foster a supportive ecosystem for budding entrepreneurs worldwide and strongly believes in the power of collaboration with the youth across the globe. Mr. Sovit is also a regular elocutionist at industry events and conferences and shares insights on topics such as innovation, collaboration, role of youth at various levels of governance, democracy, and in business. Mr. Sovit has been a significant contributor to various digital and physical news, research, think tank platforms as an industry expert as well as the Y20 chair. Sir, please. Thank you, ma'am. Honorable MOS Health, Bharti Praveen Pawar ji, respected Meenu Singh ma'am, respected Jaya ma'am, respected my team member Y20 Secretariat Arya Jha ji, honorable guests and friends from media, I would like to welcome you all to this program Y20 Consultation event. First of all, I would request you all, Bharat Mata ki, Vande, Vande, Vande. Friends, you all know India is having the presidency of G20, and as ma'am has said and explained why G20 is important and why India is having this G20 presidency, and it is very crucial for Indians to have and know why India is having and what is the importance of G20 India. In the words of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो अब वक्त है भारत के हर एक शहर, भारत के हर एक गांव और हर एक भारतीय को इस नेतृत्व का हिस्सा बनने का। तो क्या आप सभी इस नेतृत्व का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? इफ यस, भारत माता की। थैंक यू। आज मैं साथियों आप सभी के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण जो उन्होंने कहे थे आप सभी के सामने दोहराना चाहूंगा। हम सभी भारतीयों का विकसित भारत में निर्माण का सहयोग, गुलामी की सोच से बाहर निकलना, अपनी विरासत पे गर्व करना, एकता और एकजुटता, अपने कर्तव्यों का पालन करना। You will feel or might think कि अनमोल is saying this much, अपनी एकता एकजुटता, why? There is a system, Prime Minister, Executive, Judiciary, why we will do? Why I am important for India and the growth of India? Why me? I'll give one example. You might have heard about Ramayana. I hope most of people here, they must have heard about Ramayana story. When Sri Ram was busy in building the bridge, every people, every friend of him, they was helping him, no? And there was a small creature. What we call that? A squirrel, no? वो गिलहरी भी अपना सहयोग दे रहा था। ठीक उसी प्रकार जब हमारा देश अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर आगे बढ़ रहा है तो उस गिलहरी की माफिक हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खुद के निर्माण में, अपने भारत के निर्माण में सहयोग करें। हम अब स्वार्थी लोग होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग, वी मस्ट थिंक एंड वी यूजुअली थिंक अबाउट आवरसेल्फ। और एक इंसान को क्या चाहिए इन आवर लाइफ? व्हाट वी वांट? हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें। इन सिंपल वर्ड, इन माय वर्ड्स, इफ यू से स्वस्थ, मस्त और व्यस्त, नो? एम आई राइट? स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। स्वस्थ रखने वाले तो यहां हैं समाज के नेतृत्व करता,
में आए या स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहना चाहते हैं जीवन। कोई भी इंसान क्या चाहता है भाई, अनमोल शोभित भी क्या चाहता है, स्वस्थ रहें, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, मस्त रहें। कब मस्त फील होता है? जब हम अपने काम को 100% कर लेते हैं तो वी फील सेटिस्फैक्शन, नो दैट इज मस्त टाइप इन माय वर्ड। और व्यस्त, जीवन में कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए और करने के लिए काम होना चाहिए, नहीं तो हर एक भारतीय या हर एक इंसान यही चाहता है कि भाई हम स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहें। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर हम अपने कार्यों को, एज इन द वर्ड्स ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कार्यों को 100% दें। अगर हम 100% देंगे तो सेटिस्फैक्शन फील होगा, और काम को 100% देंगे तो व्यस्त रहेंगे। लेकिन इस सब के लिए जरूरी है हमारा स्वस्थ रहना, एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर थीम, हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स agenda for youth. Health is not only about the physical health, what we mostly talk about. It's very important to talk about the mental well-being and health. In our society and in our country, we rarely talk about the mental well-being and health. And I'm requesting you all, the leader of society, to make this a buzz in our country that mental well-being is also important. And I request, I'll beg you all, because you all are the leader of society, you will head, you all are here, it represents that you are the leader of society, and you have that responsibility to lead the society. That's why I'll request, kindly give a grand clap for yourself. हमारे भारत में इसको मेंटल वेलबींग को, मेंटल वेलनेस को एक समाज में बज बनाने की ज़रूरत है। हमारे सोसाइटी में हमारे भाई, छोटे भाई बहन, दोस्त मित्र मेंटल वेलबींग, डिप्रेशन में बात करने की वो जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इसको ऐसे माना जाता है कि समथिंग वेरी डेंजर टाइप ना। तो यू ऑल आर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्योंकि आप पे सोसाइटी विश्वास करती है, एंड इट इज अ टीजिंग फैक्ट, 30% of Indian youth society is all because of depression. And we cannot explain the pain of a mother whose daughter or son dies at an age of young age. उस माँ की व्यथा और कष्ट को कोई अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। उस माँ के दर्द को, उस पिता और उस भाई के कष्ट को कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। जो एक माँ, एक भाई, एक बहन, एक पिता सहता है जब उसका भाई, बेटा, पुत्र अल्प आयु में सुसाइड कर लेता है, तो उसको अपने भारत के, अपने सोसाइटी से अलग करने के लिए हम सभी का कर्तव्य है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अपने कर्तव्यों का पालन करना। एक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अपने विरासत पे गर्व करना। हमारा विरासत क्या है भाई? Not only the physical virasat, the intellectual virasat, what we have. If we talk about under this theme, we have a traditional medicine, yoga, meditation. ये हमारा विरासत है। तो हाँ भाई, विश्व के साथ चलने के लिए कंधे से कंधा मिला के चलना जरूरी है, लेकिन व्हाट वी हैव उस पर भी गर्व करना, उसको पालन करना, आगे बढ़ना, ये भी जरूरी है। कोविड में हमने क्या देखा? दवा, काढ़ा, मेडिटेशन, योगा, पूरे विश्व ने ये माना कि भारत की विरासत, इट मीन्स समथिंग।
तो हमें अपने विरासत पे गर्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? In simple words, I would like to say the presidency of India is mainly revolves around 3H, that is healing, harmony, and hope. Healing our mother earth, creating harmony within our family, and hope for better future. That is our theme, that one earth, one family, and one future. Vasudeva Kutumbakam. During our presidency, we will present India's experience, learning, and models as possible templates for others, particularly the developing nation. भारत माता की। मुझे आज काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ इस मंच पे आने के बाद। मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, being the chair of Y20, I have got this opportunity to travel across India and I have participated in many events. But I am very happy and I am thankful to the authority of AIIMS Rishikesh कि आज इस कक्ष में हमारी बहनों की संख्या भाइयों से ज़्यादा है। समाज में I'll give one example, very simple. मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ, फ्रेंड्स जो हमारे गार्जियन हैं, बड़े अग्रज जो भी उपस्थित हैं यहाँ पे, इस समाज रूपी शरीर में अगर हमारी बहनों को मौका ना मिले तो जिस प्रकार हमारा शरीर जो है ना, ये अनमोल शोभित का अगर एक हैंड टूट जाता है, सपोज दैट, तो क्या अनमोल शोभित 100% अपना काम कर पाएगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार समाज रूपी शरीर में अगर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी को मौका नहीं मिलता है, उनको उतना बल नहीं मिलता है, तो हमारा सोसाइटी, हमारा भारत जो हमने सोचा है कि 2050 तक हमारा स्वर्णिम काल होगा, वी विल लीड दिस वर्ल्ड बिकॉज दे आर रेडी टू फॉलो अस, तो हमारा समाज उतना विकसित नहीं होगा। I'll give one simple example. हमारी बहनें तो भाइयों के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए कुर्बानी देते आई हैं। अगर हम अपने इतिहास में देखें, श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उनके लिए अपनी जान की बाजी किसने लगाई थी? एक बहन ने लगाई थी। वो इतनी छोटी बहन थी, उसको पता भी नहीं था। फिर भी अगर हम अपने इतिहास को देखें तो अपने भाई की जान की रक्षा के लिए एक बहन उस वक्त भी खड़ी थी। तो ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गौरवशाली इतिहास है जो हमें बताते हैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि वी रिस्पेक्ट आवर सिस्टर, वी आर देयर फॉर हर, एंड वी वॉक टुगेदर, एंड इंडिया इज प्राउड to have daughters like you all. And I request my sisters, ये जो समाज का नेतृत्व करने की बात अनमोल शोभित कह रहा है, इसमें आपका योगदान ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ना ही एक खुद के निर्माण में सहयोग करते हैं, बल्कि आप एक समाज, एक परिवार के निर्माणकर्ता होते हैं। With these words, I would like to conclude. And before that, I would like to open the platform of Y20India, that is the youth organization of G20, for all our friends here. If you wants to participate in Y20India,
And if you want to contribute in some way, so you all are welcome. Kindly give your reviews, your suggestion, your views on our platform, our website, that is Y20India.in. And if you want to contribute on our theme, that is health, well-being and sports agenda for youth, you want to submit some article, you all are welcome. In a way, Y20 India is a platform to give voice to the unheard voice of Indian youth. आज पूरा विश्व भारत पे गर्व कर रहा है. क्यों? क्योंकि भारत का जन्म भी युवा है, भारत का मन भी युवा है, भारत अपने सामर्थ्य में युवा है, भारत अपने सपनों में भी युवा है, भारत अपने चिंतन में भी युवा है, भारत अपने सोच, अपने चेतना में भी युवा है. इतनी बड़ी युवा आबादी के साथ साथ हमारी लोकतांत्रिक मूल्य हमें सबसे अलग करते हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं. भारत यानी कि हम और आप. भारत माता की जय हिंद. थैंक यू. Thank you so much, Mr. Amol Sovit ji. भारत माता की जय के नारे के साथ तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम स्वागत करने जा रहे हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का. आई इनवाइट डॉक्टर गीता नेगी, मिस आयुषी एंड मिस्टर तुषार to please welcome our guest of honor, Shri Premchand ji. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Shri Premchand ji is Minister of Finance, Urban Development, Parliamentary Affairs, Census and Reorganization for Uttarakhand government. For the fourth time, he has won Uttarakhand Assembly elections 2022 for Rishikesh Assembly with a huge majority. Since student life, sir has been active in various religious, social, political activities, represented Uttar Pradesh in volleyball, and was a national level player in sports. Before entering into political life as a part of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, he has actively participated in several movements. In a survey of the year 2015, he was selected as the best legislator and was also awarded Personality of the Year by an organization. He was made the national co-convener of BJP's Ganga Cell, seeing the devotion and faith towards Mother Ganga. Please give him a big round of applause. Now I would request Shri Premchand ji to kindly address the audience. बोले भारत माता की. जितने हम भारतवासी हैं वो तो बोल ही सकते हैं जोर से. भारत माता की. मैं जानता हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, चूँकि हम भारतवासी हैं, हम अपनी भारत माँ से अपने हर काम को शुरू करते हैं. एक बार फिर बोलूँगा, भारत माता की, गंगे मैया की. हम माँ गंगा के पावन तट पे हैं, आपने देखी होगी माँ गंगा मेरे बगल में बह रही है. फिर बोलेंगे गंगा मैया की, गंगा मैया की. थैंक यू. अपने इस बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम में हम सभी के बीच आशीर्वाद देने पधारी हमारे केंद्र की बहुत ही यशस्वी ओजस्वी माननीय मंत्री श्रीमती भारती परवीन जी. और मैं चाहूँगा आपके लिए जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन हो, क्योंकि आपके नेतृत्व में एम्स में हम यहाँ उपस्थित हैं. हमारे एम्स की डायरेक्टर, जिनके नेतृत्व में एम्स बहुत बखूबी से आगे बढ़ रहा है, और आप कल से देख भी रहे होंगे जिस प्रकार से एम्स की व्यवस्था, एम्स के कार्यकलाप. मैं ऐसी डॉक्टर मीनू सिंह का भी स्वागत कर रहा हूं और चाहूँगा उनके लिए भी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो. अभी हम जिनका बहुत सुंदर उद्बोधन सुन रहे थे, हमारे U20 के चेयरपर्सन आदरणीय अनमोल सोभित जी, हमारे बीच उपस्थित संकाय अध्यक्ष डॉक्टर जया चतुर्वेदी जी, हमारे सभागार में उपस्थित
अनेकों हमारे विशेषजन, अभी जिन सत्रों में आप सभी का उद्बोधन होना है, ऐसे मेरे तमाम विशेषज्ञगण, पूरे देश और विदेशों से आए मेरे प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले इस उत्तराखंड में पावन धरती पर, इस दिव्य धरती पर, चूँकि देश नहीं विदेशों से भी मेरे इस ऋषिकेश की पावन धरती पे लोग बड़े श्रद्धा से आने का काम करते हैं, और आज संयोग से, सौभाग्य से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। ऋषिकेश का एक प्रतिनिधि होने के नाते, सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जिस ऋषिकेश में हम सब यहाँ बैठे हैं, हालांकि Y20 हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पहले G20 और उसके बाद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है Y20 के लिए। और मैं बधाई दे रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो अपने देश के बहुत ही यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें मुझे लगता है कि जब हमारे आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हों और अमृत काल प्रारंभ हो रहा हो, ऐसे में G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य हमारे भारत को यानी माननीय मोदी जी को प्राप्त हुआ। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, उनको बधाई दे रहा हूँ। भाई बहनों, हम जानते हैं जिस प्रकार से Y20 G20 का वो समूह जो आज विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। जैसे मैंने कहा कि देश नहीं विदेशों से भी बहुत सारे हमारे प्रतिनिधिगण यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जो विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक ये वो मंथन है जिसमें से कुछ अमृत निकलेगा, और वो अमृत लेके हम लोग आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में उस अमृत का पान करके इस विश्व को दिशा दिखाने का काम करेंगे। यहाँ जितने प्रतिनिधिगण आए हैं, भाई बहनों, जैसा इसकी थीम है, उस नाते मैं कह सकता हूँ कि हम अपनी जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ, विचारों को आदान प्रदान करने के साथ साथ, बातचीत करने के साथ साथ कुछ ना कुछ निष्कर्ष लेके हम यहाँ से जाएंगे। और जैसे अभी हमारे चेयरपर्सन कह रहे थे कि भारत हमारा, जितनी इसकी आबादी है, इसमें ज़्यादातर भागीदारी युवाओं की है। और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, हमारा युवा भारत आज देश का नहीं विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे यहाँ का युवा देशों में डंका नहीं बजा रहा है, विश्व के अंदर अपना डंका बजा रहा है। और मुझे तो खुशी होती है कि जब हमारे विवेकानंद जी ने विश्व की उस पावन धरती पे जाके भारत क्या है उसके बारे में बताने का काम किया, आज उन्हीं युवाओं को, और उनके बारे में जैसा हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा था उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर पाओ। ये है हमारा भारत, ये है हमारी भारत की सोच। और मैं कह सकता हूँ कि जितने यहाँ युवा आए हैं, इसमें एक बात तो मेरे को लगती है मुझे जरूर कहनी चाहिए, वो है व्यसन। आज हमारी युवाओं की बढ़ती फौज व्यसन की तरफ बढ़ रही है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि मैं ये कह सकता हूँ कि व्यसन यदि हम छोड़ेंगे, कुरीतियों की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और खान पान यदि हम ठीक रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो भी हम यहाँ से लेके जाएंगे उसका लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ युवा आए हैं वो एक सक्षम आवाज़ बन के आगे बढ़ेंगे, और इन सब बातों के साथ साथ स्वास्थ्य, कल्याण और खेल के विषय में ये जो आज चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं, उससे हमें ज़रूर लाभ मिलेगा। आदरणीय मोदी जी ने भी खेलो इंडिया एक नारा दिया है। आज पूरे देश के अंदर हमारे युवा खेल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते, चूँकि हमारे अनेकों वक्तागण यहाँ पे हैं,
मैं आज ऐसे मौके पर खड़ा हूँ कि जब बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, तो मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। इस बुद्ध पूर्णिमा में आप यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। भाई बहनों, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे उत्तराखंड की भूमि, जिसे हम देवभूमि के रूप में भी जानते हैं, आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ का वातावरण और जिस एम्स में आप यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है ये एम्स भी एक अपने आप में एक अलग तरह का एम्स है। हमारे देश के अंदर अनेकों एम्स हैं, लेकिन गंगा किनारे कोई एम्स है तो ऋषिकेश का एम्स है। जब हमारे यहाँ के रोगी या उसके अन्य लोग, जब उनको लगता है कि यहाँ से थोड़ा बाहर निकलें और माँ गंगा के दर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको बहुत सुकून मिलता है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आजकल 4 धाम यात्रा भी चल रही है। बहुत दूर से आए होंगे आप लोग, एक बार 4 धाम यात्रा भी जरूर करिए। मेरे उत्तराखंड की जो पावन भूमि, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, जिसे हम संतों की भूमि कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ बढ़े तो इसी क्षेत्र से होके वो स्वर्ग की तरफ बढ़े थे, यानी कि वो धरती ये उत्तराखंड की है। उसमें आप 4 धाम की तरफ जरूर जाएं, क्योंकि ये ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी भी है। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि ऋषिकेश का ये एम्स, ये पहला एम्स है पूरे देश के अंदर जहाँ पर हेलीपैड बना है। मेरे पहाड़ पे यदि कोई घटना घटती है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, जाए तरफ 4 धाम हैं, अनेकों ऐसे घटनाएं जब घटती हैं, तो हेली सेवाओं का यदि कहीं सुविधा मिलती है तो मेरे ऋषिकेश एम्स में मिलती है पूरे देश के अंदर। मैं चूँकि यहाँ हमारी माननीय मंत्री बैठे हैं, इसलिए इनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ इस रूप में। और इस रूप में भी मैं एम्स प्रशासन को बधाई दे रहा हूँ कि यहाँ जो सुविधाएं हैं उसमें ड्रोन सेवा के माध्यम से, शायद ये भी पहली एम्स है जहाँ ड्रोन सेवा के माध्यम से दूर क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से जो हमारी सुविधाएं हैं, जो दवाएं हैं, उसे भेजने का काम कोई करता है तो एम्स ऋषिकेश करता है। इसलिए एम्स प्रशासन को और हमारे माननीय मंत्री को और हमारे माननीय मोदी जी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी कोरोना का जिक्र हमारे आदरणीय साथी हमारे कर रहे थे, अनमोल जी, तो मैंने देखा है एम्स के अंदर उस समय, चूँकि कोविड एक ऐसी समस्या थी, ऐसी बीमारी थी कि जिसको लेके शायद कोई दुनिया में बचा हो जो उससे प्रभावित ना हुआ हो। लेकिन उस समय पे जिस प्रकार से इस क्षेत्र नहीं, आसपास के तमाम क्षेत्रों में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे निदेशक महोदय और इनकी पूरी टीम को कि जिस प्रकार से उन्होंने रोगियों की सेवा की है। और चाहूँगा जोरदार तालियों से एम्स प्रशासन का धन्यवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ज़रूरतों में काम आना। वैसे तो आप देखिए ओपीडी कितनी चल रही है। अनेकों बार यहाँ जब हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। मैं उस समय का साक्षी हूँ। तब से लेकर आज तक की इसकी जीवन यात्रा में अनेकों आयाम इस एम्स ने छुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई दे रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए, चूँकि मैं थोड़ा विलम्ब से आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अपने तमाम युवाओं के लिए सिर्फ 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि हम सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ समझने के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ डिस्कशन करने के लिए आए हैं। और हम सब इस प्रकार से करें कि ताकि हमारा जीवन भी सफल हो। तो मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ज़िंदगी, खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ज़िंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ज़िंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ज़िंदगी, तुलना में गुजारो तो पस्त है ज़िंदगी। क्योंकि तुलना करने की जरूरत नहीं, आप अपना बढ़िए, तुलना करके गुजारो, तुलना में गुजारो तो पस्त है ज़िंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है ज़िंदगी। तो इंतजार किस बात का, आगे बढ़िए कि इंतजार में गुजारो तो सुस्त है ज़िंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ज़िंदगी। दिखावा किस बात का, जो आपके पास प्रतिभा है उसको आप दिखाइए, उस प्रतिभा के साथ आगे बढ़िए। दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ज़िंदगी, सीखने में गुजारो, जो मैंने कहा कि सीखने में गुजारो तो किताब है ज़िंदगी, यानी बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे लिए बाकी है कि सीखने में गुजारो तो किताब है ज़िंदगी,
मिलती तो है एक बार, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा कहते हैं एक बार मिलती है, वैसे तो हम मानते हैं कि अच्छा करेंगे तो दोबारा हम जीवन लेंगे, लेकिन कहते हैं कि मिलती है, मिलती तो एक बार है जिंदगी, तो प्यार से बिताओ जिंदगी। जन्म तो रोज भी हो तो यादगार बनाओ जिंदगी, यादगार बनाओ जिंदगी। मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए, विशेषकर अपने मेरी माननीय मंत्री जो यहाँ पहुँची हैं, हमारे चेयरपर्सन यहाँ पहुँचे हैं, अनेकों अतिथिगण जो पहुँचे हैं, फिर से दिल की गहराइयों से, क्योंकि हमारा उत्तराखंड की संस्कृति भी है कि अतिथि देवो भव, आप जितने लोग आए हैं सब मेरे अतिथि हैं। सबको प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। तालियों की गूंज बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट आई इनवाइट डॉक्टर भारती पवीन पवार, who is an Indian politician currently serving as Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Ma'am did her MBBS from Medical College in Nasik in 2002. She has been awarded as Best Debut Women Parliamentarian Lok Sabha for the year 2019 by Lokmat Group. The award was given by the then Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu. Before taking her current assignment, she has held several positions as member of the Standing Committee on Health and Family Welfare in Parliament, the Petition Committee, Consultative Committee for Skill Development and Entrepreneurship in Parliament, and Indian Nursing Council. Madam is the first women Union Minister from Nasik and a Union Minister from Nasik region after 59 years. So here we are talking about the women empowerment. As a social responsibility, she has worked towards the eradication of malnutrition and worked to provide clean and safe drinking water to all the far-flung tribal areas. Madam, you are a true inspiration to the youth of today. I request Honorable Madam to enlighten the gathering by her speech. Madam, please. नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। अभी 12 तो बजे। सत श्री अकाल। और कोई? जय हिंद और जय उत्तराखंड। और अभी यूथ तो जाग रहे हैं, चलो बोलो बोलो। जय श्री राम, जय गंगा मैया और जय बद्री केदार। चलो सब भगवान आ गए। सभी को नमस्कार। उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत करते हुए आज मंच पर विराजमान मेरे साथ आदरणीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, हमारे यहाँ की एम्स ऋषिकेश डायरेक्टर डॉक्टर मीनू सिंह, श्री अनमोल सोवित जी, चेयरपर्सन Y20, डॉक्टर जया चतुर्वेदी जी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास जी फ्रॉम दिल्ली, डॉक्टर प्रामाणिक जी फ्रॉम गुवाहाटी, डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी जी मंगलागिरी एम्स, डॉक्टर अरविंद रघुवंशी जी रायबरेली एम्स, मान्य कुसुम कड़वाल जी, मान्य अनीता मंगई जी, all the delegates, representatives from other countries, foreign countries, some students, मेरे मीडिया के हमारे साथी, सभी मान्यवर। I welcome you all on this Y20 consultation in this divine city of ऋषिकेश। ऋषिकेश ऋषियों का स्थान है, जो गंगा के तट पर स्थित एक आध्यात्मिक शहर है। तीन तरफ से हिमालय की शिवालिक श्रृंखला से घिरा। यहाँ आने वालों के लिए एक गहरा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है
SIA ऋषिकेश। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी ऋषियों के इस पुण्य भूमि पर उपस्थित हैं। आज का दिन विशेष रूप से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करने का और भगवान बुद्ध के संपूर्ण विश्व को दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। मुझे यकीन है कि ऋषिकेश के दौरान, यहाँ रहने के दौरान, आप इस जगह की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव जरूर करेंगे। Friends, this platform Y20 is for young talented people from G20 countries to engage in discussions and make recommendations on various global issues. You are the future of the world, right? Am I right? So thoda loudly. Once again. Yes. Now you are the future of the world. Such platforms are necessary for empowerment of young minds and to facilitate your participation in decision-making processes at local level, national level, and international levels. The Y20 Forum addresses a range of global challenges, including but not limited to climate change, economic inequality, gender inequality, and digitalization. It will help in building international partnerships between young people from different countries and cultures and to foster collaborations of issues of global concern. साथियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ऋषिकेश एम्स को भारत में यूथ 20 कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिला है। मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऋषिकेश एम्स हमारे हिस्ट्री में जब बोला जाएगा यहाँ के यूथ को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, तो हमने Y20 का भी यहाँ पे हमें मौका मिला है। और किसी भी देश की असली पूंजी जो है वो है कुशल युवा और हेल्दी युवा, स्वस्थ युवा। युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें बेहतरीन शिक्षा हो, बेहतरीन प्रशिक्षण हो, बेहतरीन स्वास्थ्य हो, उन्हें प्रदान की जाना चाहिए ताकि एक प्रभावी नेता, एक प्रभावी व्यक्ति वो बन सके और दुनिया को बेहतर बना सके। एक स्वस्थ युवा, एक हेल्दी युवा का अर्थव्यवस्था के विकास से सीधा संबंध होता है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ है। मुझे लगता है युवाओं का इस क्षेत्र में आना, एक इकोनॉमी सेक्टर में आना, ना सिर्फ किसी ज़िले के, किसी राज्य के, लेकिन एक देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश के बेहतर भविष्य के लिए सबसे पहले युवाओं को हेल्दी रहने की ज़रूरत है। आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि नागरिकों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की हमेशा से ही सोच रखी है। हमें अपना ध्यान इलनेस से वेलनेस पर हमने केंद्रित कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दृष्टिकोण से, इस विजन से, इस नेतृत्व के ये परिणाम है और माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के मार्गदर्शन में आज हमारे पूरे देश भर में हमारे 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्थापित किया गया है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। गांव-गांव तक ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अलग अलग स्क्रीनिंग हो, कैंसर का स्क्रीनिंग हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये बेसिक स्क्रीनिंग के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के उपयोग में आ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि 1.5 लाख कभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन से ये बने भी, आज हम सब फंक्शनल भी है। उत्तराखंड में भी वो काफ़ी मात्रा में फंक्शनल है। We must acknowledge that India has a great demographic dividend in the form of vibrant and dynamic youth population, and Government of India under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Modi ji is committed to provide the best of the facilities to tap the potential of youth power,
Government of India through various schemes is empowering the youths by upgrading their skills, developing scientific temper, inculcating the entrepreneur spirit in them, and bringing them together to work for benefit of country and the world as well. I think the best way to predict your future is to create it. So realizing the need for holistic development of children under the Samagra Shiksha, sports and physical education component has been introduced for encouragement of sports, physical activities, yoga, co-curricular activities, etc. Under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji, our government is also working on national youth policy which seeks to catalyze widespread action on youth development across priority areas. साथियों, भारत ने दुनिया को विश्व स्तरीय एथलीट दिए हैं। खिलाड़ियों को हमारी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोत्तम खेल सुविधाओं के कारण हाल ही में हमने देखा कि नीरज चोपड़ा जी हो या फिर निखत जरीन जैसे हमारे भारतीय एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप जीती है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश का गौरव इन्होंने बढ़ाया है। खिलाड़ियों के खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने और देश में खेल की संस्कृति को विकसित करने के लिए आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे राज्य मंत्री माननीय श्री निश्चित प्रमाणी जी के कुशल मार्गदर्शन में युवाओं के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनेक ऐसी उपलब्धियां और नई पहल हासिल की है। खेलो इंडिया 2018 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था कि देश में एक खेल को पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना। और यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर ये खेल की पहल को आगे बढ़ाना है और उसके लिए मिनिस्ट्री उसे बजट भी प्रोवाइड करती है और उसका उद्देश्य एक ही है कि हमारे यहाँ प्रतिभाशाली एक अच्छे एथलीट्स का एक पूल बनाना है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। Friends, our government has also identified the mental health as another important priority. As we know, after COVID, stress and all that, increasing our mental stress, which leads to many mental problems. So we have launched National Telemental Health Program, which is also known as Telemanus, across the country with 24/7 service, helpline service to provide universal access to affordable, equitable and quality mental health care through teleservices under the National Mental Health Program. And I think Madam AIIMS Rishikesh is also providing this teleconsultation service. So I must say thanks to AIIMS Rishikesh also for providing this very good teleconsultation service. Also, since times immemorial, India has been using yoga and meditation as a traditional cure for mental stress. Yoga and Indian tradition we have gifted to world is a power tool for inner engineering through which one can explore the metaphysical and achieve spiritual oneness. मैं तो कहूँगी कि युवाओं ने योगा से जल्द जुड़ना चाहिए। आपको युवा रखने के लिए योगा का मेडिटेशन का सबसे अच्छा महत्व है, जो स्ट्रेंथन तो करता ही है लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं जानती हूँ कि छोटी बात पे या हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन इससे अगर बाहर निकलना है तो ये हमारी योगा है, मेडिटेशन है, जिसका अपने रूटीन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और कभी ही अपने लाइफ में हारना नहीं है, तभी हम युवा कहलाएंगे। सही है ना? तो आपके लिए 2 लाइनें बोल दूं मैं? हाँ, सच में? वो बाजू से ज़्यादा जोर से आवाज़ आ रही है, इनको नहीं सुनना है। सच में? हाँ, तो सुनाती हूँ। अपने हौसलों को कभी मत बताओ,
कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। सो तकलीफ से मत डरो, हौसला बुलंद हो तो तकलीफ भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। फ्रेंड्स, you will be glad to know that our country, under the guidance of Honorable Prime Minister, is emerging as a hub of traditional medicine in the world. The Ayurveda is getting huge attention at the global forum. Friends, modern problems require modern solutions. Driven by the COVID-19 pandemic, India has adopted digital health as a breathtaking pace. Digital स्वास्थ्य सेवा, जिससे हम बहुत ही कामयाब रहे और पेशेंट की मदद करते हुए बीमारियों को रोकने के लिए और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बहुत ही कामयाब रही है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ने दूर दूर के इलाकों में भी एक एडवांस हमारी सिस्टम को पहुंचाया है, देखभाल को पहुंचाया है। डिजिटल हेल्थ इनोवेशन को समय बचाना हो या एक्यूरेसी हो या इफ़िशियंसी को बढ़ावा देना हो और स्वास्थ्य के लिए नए नए टेक्निक्स को कंबाइन करना हो, जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल हेल्थ रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी that follows an inclusive approach. The Government of India is focused on developing an integrated digital health ecosystem. Subsequently, the emergence of artificial intelligence in healthcare has been groundbreaking, reshaping the way we diagnose, treat, and monitor patients. By leveraging artificial intelligence in hospital settings and clinics, healthcare systems have become smarter, become faster and more efficient in providing care to people living in remote areas of the country. विश्व का भविष्य जिस तरह से बनेगा उसमें युवाओं की प्रमुखता से प्रमुख भूमिका निभाएंगे और हमें नीतिगत मामलों में खासकर आज जब हम Y20 की प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं तो युवा प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से उसमें शामिल करना ज़रूरी है और अन्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत से एक सेतु के निर्माण की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, यूथ हैव द आइडियाज़, द क्रिएटिविटी एंड एनर्जी टू शेप द फ्यूचर फॉर बेटर वर्ल्ड. I welcome all the young delegates from G20 nations and I want you to experience the spiritual aura of Rishikesh. I want you to all interact with each other and let this platform be a facilitator to learn about each other's cultures. We follow the traditional principle of Vasudhaiva Kutumbakam, enshrined in our Upanishads, which means whole world is one family. I thank you all for being here and being a part of this consultation, and I hope you all will take valuable insights from these discussions and work for making the world a better place to live substantially, grow together, and interact freely. As I must say, we cannot always build a future for our youth. Listen carefully. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. So, सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए फिर एक बार मैं सभी युवा साथियों को आग्रह करना चाहती हूँ कि भारत जिस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है उसमें युवाओं का बहुत बड़ा साथ, समर्थन, योगदान ज़रूरी है और उसके लिए हम सब मिलके आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं करती हूँ और एक जाते जाते एक दो लाइनें और सुनाई देती हूँ ताकि जब भी एग्ज़ाम आए या कुछ भी कठिनाई आए तो ये दो लाइनें आपको ज़रूर मदद करेगी। और वो लाइनें हैं कि हौसले के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे कुछ मगर, हार जाओ चाहे कुछ मगर, फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और एम्स ऋषिकेश और सब टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
Thank you, ma'am, for your influential message. We are charmed by your words of wisdom. Please keep the roars of clapping high till she is seated. Thank you all. I now request the dignitaries on the dais to kindly release the Y20 souvenir. I invite Ms. Samiksha and Mr. Ronak to bring forward the souvenirs and present to the honorable dignitaries. The souvenir is being released. A QR code is also available for the delegates to have a look at the souvenir. We'll provide shortly. Thank you, ma'am. Thank you, sir. We would now like to honor our the chief guest, guest of honor, and honorable dignitaries with the token of our delight and respect for being a significant part of this glorious occasion. For the honors, I request Professor Meenu Singh and Professor Jaya Chaturvedi to please come forward and present our token of appreciation to our honorable guest, Dr. Bharti Praveen Pawar. I request Professor Meenu ma'am to felicitate Dr. Bharti Praveen Pawar. Thank you, ma'am. I now invite Professor Jaya Chaturvedi ma'am to honor our guest of honor, Shri Premchand Agrawal ji. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you all. Now I request Professor Meenu Singh ma'am to present a token of appreciation to our chair Y20 Shri Anmol Sovit ji. As I said, please keep the roars of clapping on high. A big round of applause for the honorable dignitaries on the dais. We pay our sincere gratitude to all of them. Thank you all. I would now request Professor Jaya Chaturvedi, Dean Academics, AIIMS Rishikesh, Professor and Head of Department Obstetrics and Gynecologist, to propose vote of thanks. Namaskar. क्या मुझे Namaskar sabhi ko. A very warm and graceful afternoon now to all gathered today in the auditorium for the Y20 Summit. These 2 days have been a fitting tribute to our youth and an abiding commitment to the overall welfare and growth of this budding community. On behalf of the whole organizing committee, it gives me immense pleasure in proposing the vote of thanks
for this memorable occasion. And I thank our director and organizing chairperson, Professor Minu Singh, ma'am, for giving me this opportunity. Gratitude becomes love. Love becomes devotion. Devotion becomes surrender. Surrender becomes faith. And faith reveals divine. I, on the behalf of entire fraternity of AIIMS Rishikesh, first and foremost, extend my most sincere thanks to the Almighty, the Divine Power. Without His wish, nothing moves. My sincere gratitude to our Chief Guest, Honorable Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Dr. Bharti Praveen Pawar, ma'am, for gracing the event. Her presence in this function has immensely enhanced its importance. I extend my gratitude to our own elected leader from this region, Finance Minister, Urban Development Minister from Government of Uttarakhand, Shri Premchandji Agrawal sir, for his constant help and support. I also extend my gratitude to Chair 20 India, Mr. Anmol Chaubetji, for his gracious presence. Sir, thank you so much for giving us opportunity to host this wonderful event and for all the support and help required at various stages of preparation of this occasion. I am grateful to Professor AIIMS Srinivas, Director AIIMS Delhi, Professor Arvind Rajvanshi, ED AIIMS Raebareli, Professor Mukesh Tripathi, ED AIIMS Mangalagiri, Professor Surekha Kishore, ED AIIMS Gorakhpur, Professor Ashok Puranik, ED AIIMS Guwahati, and Professor Puri, our GB member, for their gracious presence and for taking out time from their busy schedule to grace this occasion. With utmost respect, I thank the torchbearer of this event, lady who leads from the front. Under her guidance, we are able to organize this mega event proudly and successfully. It is none other than our beloved director, Madam Minu Singh. Thank you, Madam, for the motivation, courage, and support for this program. We welcome and appreciate the presence of many G20 dignitaries with us. We are grateful to our guests, panelists, delegates who have traveled from all over the world and have given their valuable time to make this program a successful one. I extend my gratitude to Principal Nursing College, who is always ready to help. Attitude is really appreciable. She and her team members are always just one call away from us. Thank you, ma'am. I further extend my gratitude to Dean Exam, Dean Research, Medical Superintendent, all head of the department, faculty members, Deputy Director Administration, Financial Advisor, Superintending Engineer, SAO, PRO, and all other officers who spared time to come and motivate us and helped us a lot to organize this event. We have been very fortunate to have a team of dedicated faculties, residents and staff who work day and night and have given their best for preparation of the conference of such a magnitude. Thank you all for making this event happen. Our students sincerely worked hard for the day, and they are the real workforce behind the event. Thank you, dear students. As co-chair of the event, I am deeply indebted to my lovely colleagues who really put in their best efforts and have been a constant support in detailing of the conference. The list of their names is huge. All names we will see in the valedictory function, so wait for the end of the day. We are thankful to our office staff from RTCL, photographers, and everyone who contributing better to making this event a success. Last but not the least, we thank all our delegates from different countries who have shown overwhelming participation
You are the backbone for any event. And we promise you an excellent Y20 consultation event throughout the day. My sincere apology if I unknowingly missed anyone. Here I want to take the name of two leaders who had managed all the programs, Dr. Geeta and Dr. Vanna. But rest of them, whole team worked so hard, I am unable to take all the names. So please forgive me for that. Once again, I thank you all for being with us on this auspicious day of Buddha Purnima, which is considered to be the day of enlightenment. And we are really here to gain all the light from various deliberations throughout the day. Namaskar, we are the one. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. I now request everyone to kindly rise on your seats for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai. Thank you all. I now invite everyone to join us for tea. I request our honorable dignitaries to kindly proceed towards media room on your right and request Professor Meenu Singh and Professor Jaya Chaturvedi to kindly accompany them. I request all the delegates to move towards the second floor. The tea is waiting for you. Thank you all for joining. Thank you each and everyone. We will resume back with our technical sessions shortly. Thank you all for joining us.